how we have designed the ICE principle. Okay, so how we have designed the ICE principle for trading Ichimoku breakouts. All right. Now, once you get an idea, okay, once you get an idea, you will be able to get it. So, what have we done? So, कल जैसे कि मैंने बताया था, okay, कल मैंने बताया कि आइडेंटिफिकेशन करना है हमको, फिर कंफर्मेशन करेंगे और फिर एग्जीक्यूट करेंगे. Clear everyone? Right? Those of you who missed yesterday's session, these are three important principles. Identification is when you have selected the stocks. Confirmation is when you are going to put some filters and you are going to ensure that ये particular stocks जो है क्या ये क्राइटेरिया मीट कर रहे हैं कि नहीं, और उसके बाद हम एग्जीक्यूट करेंगे. सो आइडेंटिफाई एक अप्रोच से करेंगे, कंफर्मेशन दूसरे अप्रोच से करेंगे और उसके बाद हम एग्जीक्यूट करेंगे. क्लियर एवरीवन विद मी? कैन यू टाइप यस ऑन द चैट गाइस? अभी हमें आइडेंटिफाई करना है, कंफर्म करना है, एग्जीक्यूट करना है. सो यहां पर हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? ऑलराइट, सो लेट्स फर्स्ट let me just take you through it and then I will also go into NeoTrader. All right, good. So first up, let us do the identification. तो जब भी हमें आइडेंटिफाई करना है, alright, जब भी अभी हमें आइडेंटिफाई करना है, तो what are we going to do? What are we going to do? We are going to select the 30-minute chart. Okay, we are going to check the breakouts. All right, like I said, we are going to check out for intraday. सो यहां पर हम 30 मिनट का चार्ट सिर्फ सेलेक्ट करेंगे. कैसे करना है मैं सब बताऊंगा, पहले कॉन्सेंट्रेट कीजिए एंड लाइक आई सेड यस्टरडे, टेक डाउन नोट्स. ऑलराइट, सो 30 मिनट का चार्ट हम सेलेक्ट करेंगे. ओके, नाउ मुझे सिर्फ 30 मिनट का चार्ट्स मुझे एनालाइज करके बताओ. सो दिस इज व्हाट आई विल टेल न्यू ट्रेडर. नाउ इन दिस, ऑलराइट, in this what I will tell NeoTrader, okay, what I will tell NeoTrader is tell me, okay, tell me where the Chicago span. So this is a proprietary technology. Can everyone see this? There is CS Bullish, there is CS Bearish. Okay, there is CS Bullish and there is CS Bearish. So CS Bearish is a proprietary technology which we have incorporated into NeoTrader. So ये क्या करता है कि ये चेक करता है Chicago span, which we spoke about the fifth line. Okay, it speaks about the fifth line, Chicago span. और ये Chicago span को ये क्या कहता है कि क्या Chicago span bearish mode में है. So now since you are getting started, this is a easier approach to take. So Chicago span bearish है, तो आपको पता है कि इस पर्टिकुलर 30 मिनट चार्ट पे अकॉर्डिंग टू इचिमोकू इट इज बेरिश. नाउ कम्स द नेक्स्ट पार्ट इज द स्कोर. सो बेस्ड ऑन आवर अप्रोचेस, NeoTrader इज रीडिंग द लाइंस एंड बेस्ड ऑन द लाइंस वो आपको एक स्कोर देता है. तो जैसे ही ये प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी हो गया तो एक रैंकिंग होता है. The stocks are ranked based on their Chicago span. Okay, based on the Chicago span, it is ranked, and you get a rank here. So we will be taking only rank 1. Okay, पहला क्या किया? This is the first step. Okay, we put this step number 1. So ये आपका step number 1 हो गया. यहाँ भी हम identification में है. We are in step 1. We do this. Okay, then you select CS bearish. So you do this, bearish select करो या bullish select करो, सिर्फ एक टाइम पे एक ही select करना है. Then you have to sort it by the rank. Clear है? Step 3. Who are clear till 1, 2, 3? Please type 1, 2, 3 on the chat, guys. क्योंकि NeoTrader आपको पूरा 30 मिनट चार्ट को एनालाइज करके उस पे CS का
क्या सिचुएशन है एसेस करके आपको यहां पर बताएगा। ऑलराइट, नाउ 30 मिनट चार्ट, CS बेरिश, ये आ गया। नाउ वी आर गोइंग टू द अदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट दैट विल हेल्प अस। ऑलराइट, सो ये 2 पार्ट कंफर्मेशन है। ओके, सो नाउ यहां पर आपको स्टॉक्स मिल गए। नाउ आपको कंफर्म करना है कि दिस पर्टिकुलर पार्ट, ओके, दिस इज योर स्टेप 4। ओके, आपका स्टेप 4 क्या है? आप उसको फिल्टर करेंगे। आपके पास तो इतना सारा स्टॉक होगा, आप पूछेंगे अभी इतने सारे स्टॉक में काम कैसे करें, तो यहां पर हम इसको फिल्ट्रेशन में डालेंगे। सो दिस इज वेयर द कंफर्मेशन पार्ट स्टार्ट्स। ऑलराइट, दिस इज वेयर द कंफर्मेशन पार्ट स्टार्ट्स। सो व्हाट आर यू डूइंग? you are going to select, so there is a scoring done. Okay, there is something called as scoring. Okay, and there is something called as ranking. तो ये दो चीज होता है इन न्यू ट्रेडर। सो यहां पर आपका रैंकिंग हो गया और यहां पर आपका स्कोरिंग हो गया। इज एवरीवन विद मी? कैन टाइप SR ऑन द चैट। यहां पर आपका स्कोरिंग हो गया। So what are you doing? You are reducing the list. And why are you reducing the list? Because आपको इतने ढेर सारे स्टॉक्स में काम नहीं करना है। Got it? So you want to just filter down the stock so that the probability of success improves. आपको probability of success improve करना है। आपको इतना 20-25 स्टॉक लेके काम नहीं करना है। You want to improve the probability of success. So you did this step 1, 2 and 3। तो आपका आइडेंटिफिकेशन हो गया और उसके बाद आप क्या करेंगे कि इसको स्कोर से आप फिल्टर करेंगे। सो आप जब इस स्कोर से फिल्टर करेंगे, सो आपका जो 25 का लिस्ट है उसमें से शायद 5 हट जाएगा एंड देन यू विल हैव ओनली 20 स्टॉक्स इन दैट लिस्ट। So you will know that 20 stocks are lying within this score. So how is this score and what is the purpose of this score? Okay, many times you have seen that you have bought some stock which has been doing well for a while, but then suddenly आपने देखा कि आज जब भी आपने लिया वो स्टॉक चला नहीं। क्यों? क्योंकि वो स्टॉक बहुत दिन से चल रहा है और आज जाकर आप उसे ले रहे हैं तो इट इज रीचिंग ओवर बॉट लेवल्स। सो ओवर बॉट एंड ओवर सोल्ड वो सिचुएशन है प्राइस एक्शन के, जहां पर वो आपको कह रहा है कि द मूवमेंट इज हैज हैपेंड क्वाइट अ बिट, सो नाउ रिलैक्स, नाउ डोंट पार्टिसिपेट। सेम वे ऑन द डाउन साइड, सेम वे ऑन द अप साइड। इज एवरीवन विद मी? कैन यू टाइप OBOS ऑन द चैट? ओवर बॉट यानी ज्यादा खरीद लिया, ओवर सोल्ड यानी ज्यादा बेच दिया। सो उस सिचुएशन से बचने के लिए, उस सिचुएशन से उस स्टॉक को निकालने के लिए ये हमने स्कोर डिजाइन किया है। सो बेस्ड ऑन द इचिमोकू थ्रेड्स द स्कोर्स आर डिजाइन। सो यू कैन सी हियर कि इचिमोकू को कितने डिटेल में स्टडी किया है हमने, और सर ने पूरा उसको इचिमोकू को डिटेल में स्टडी करके आपको प्रेजेंटेशन दे रहे हैं कि कौन सा स्टॉक देखना है, कौन सा स्टॉक नहीं देखना है। नाउ दिस पर्टिकुलर स्टेप 4 करने के बाद जो 25 स्टॉक्स थे आपके, इट विल बिकम 20 और 15 और वॉट एवर। नाउ दैट स्टॉक you will convert into a watch list. I'm going to demonstrate to you everything. All right, I'm going to demonstrate to you everything, so do not worry, just pay attention. All right, because attention will give you results. If you want results, then you got to pay attention. All right, so now the once you make that watch list क्या है? Neo Trader में जब भी आप watch list बनाएंगे, how many of you know watch list? Can you type WAT on the chat, guys? How many of you know watch list? वॉच लिस्ट तो सुना होगा, ट्राई तो किया होगा। जो नए हैं, डोंट वरी, आई एम गोइंग टू शो दैट टू यू एज वेल। सो वॉच लिस्ट इज अ बकेट ऑफ स्टॉक्स, मे बी बेस्ड ऑन द स्ट्रेटेजीज विच यू आर अप्लाइंग, or maybe based on your own choice. You can create your own watch list and
you take the help of NeoTrader to help you generate some signals in that. So now once I take that watch list, I will go into my rolling ticker. All right, then वहां से I will take the help of Camarilla. ठीक है, कैमरिया पिवट्स का हेल्प लेकर जब भी कैमरिया का यहां पर आएगा, अभी आपको बहुत सारा स्टेप्स लग रहा है, मैं उसको एक एक करके सिंप्लीफाई करूंगा, शांति से सुनिए। ऑलराइट, डोंट गेट इनटू अरे बहुत ज्यादा है बहुत ज्यादा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप कॉन्सेंट्रेट कीजिए, इसको सब मैं डेमोन्स्ट्रेट करने वाला हूं। सो नाउ यू कैन सी हियर दैट दिस पर्टिकुलर वॉच लिस्ट को जो मैंने डाला है बकेट में, वो जब स्कोर 2 आ जाएगा, ऑलराइट, स्कोर 2 आ जाएगा, तो यहां पर आपको ये दिख जाएगा कि यहां पर कैमरिया का एक्टिविटी शुरू हो गया है। सो व्हेन विल मेक मनी, we will make money when there is a movement in our stock, when there is a momentum in our stock. So यहां पर बेरिश स्कोर आ गया, तो मतलब आपको बेचना है। कहां पर बेचना है? स्कोर 2 के लो के नीचे, डेज लो करके यहां पर आएगा, तो उस लो के नीचे आपको बेचना है, तो यहां पर आ जाएगा। So that's how we will go about, and then once you get inside द स्टॉक एनालाइजर, ओके, अगर आपको जानना है क्या लेवल्स तक चलेंगे, ऑल यू वांट टू डू, ओके, दिस इज अ कंफर्मेशन पार्ट। ऑलराइट, सो आइडेंटिफाई किया आपने, और यहां पर थोड़ा कंफर्मेशन किया पार्ट ए, यहां पर कंफर्मेशन किया पार्ट बी, तो आपका पूरा सेट हो गया। नाउ यू कैन सी हियर दैट यू विल गो एंड चेक in the stock analyzer for the targets, okay, for the targets जो है आपको स्टॉक एनालाइजर से मिल जाएंगे। अगर नीचे की तरफ है तो L5 L6 आपका टारगेट होगा, ऊपर की तरफ है तो H5 H6 आपका टारगेट होगा। राइट, सो ऐसे आप आपका एग्जीक्यूशन करेंगे। सो आइडेंटिफिकेशन, कंफर्मेशन, एग्जीक्यूशन। ऑलराइट, सो आई होप यू गॉट सम आइडिया कि ICE इचिमोकू के अंदर कैसे किया गया है। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम चलेंगे एंड वी विल चेक ऑन नियो ट्रेडर। राइट, विल चेक ऑन नियो ट्रेडर कि इसे कैसे किया जाए। राइट, सो नाउ ऑल ऑफ यू गाइस कैन ओपन योर नियो ट्रेडर। राइट, ऑल ऑफ यू गाइस कैन ओपन योर नियो ट्रेडर एंड लेट्स सी द इचिमोकू डैशबोर्ड। ऑलराइट, सो इचिमोकू डैशबोर्ड में चलेंगे एंड इचिमोकू डैशबोर्ड रहा ये, करेक्ट। तो आइडेंटिफिकेशन के लिए व्हाट आई डू इज आई विल फर्स्ट रिमूव दिस। इसको रिमूव करने के लिए सिर्फ आपको क्रॉस करना है, यू हैव टू क्रॉस दिस। ऑलराइट, एंड you got to click on what kind of signal you want। ठीक है, आपको बैरिश चाहिए, बैरिश क्लिक कीजिए, तो ये सारे बैरिश आ जाएंगे। ऑलराइट, ये सारे बैरिश आ जाएंगे। राइट, नाउ व्हाट यू वांट टू डू, you want to do the part A of your confirmation, so you only want to take, so यहां पर आना है आपको, can everyone see it, यहां पर आना है, यहां पर आना है, और यहां से आपको क्लिक करना है और बेयर स्कोर सेलेक्ट करना है। बेयर स्कोर सेलेक्ट करने के बाद मुझे यहां पर सेलेक्ट करना है 20 से लेके 80, और यहां पर मुझे आई हैव टू सॉर्ट इट बाय द रैंक। क्लियर विथ मी एवरीवन? सो यहां पर क्या हो गया, आई नाउ हैव गॉट ऑन दिस पेज all the stocks that are bearish. This is a proprietary approach. All right, this is a proprietary approach that is taking. So आपको ढूंढना नहीं है, ओके, आपको कुछ भी ढूंढना नहीं है, आपको यहां से पूरा मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा आपको? यू विल गेट एवरीथिंग इंस्टेड ऑफ यू गोइंग एंड सीइंग कि कहां पर इचिमोकू ऊपर है, कहां पर इचिमोकू नीचे है। लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू सी नाउ, तो ये आपको ढूंढना पड़ेगा कि इचिमोकू कहां पर है, ऊपर है, नीचे है, क्या है। तो ये सब ढूंढने के बजाय, ऑलराइट, ऑन अ 30 मिनट चार्ट कहां पर है। तो नाउ व्हाट हैज हैपेंड हियर, कल मैंने आपको बताया था
क्या हो रहा है यहाँ पर क्लाउड सपोर्ट हो रहा है। कहां पर क्लाउड सपोर्ट होता होगा, कहां पर ब्रेकडाउन होता होगा, आपको ढूंढना नहीं है। यहाँ पर जो है CS लाइन के हिसाब से, ऑलराइट, यहां पर आपको बता देगा। यू कैन सी हियर, यहां पर आपको बता देगा। You just have to go to the Ichimoku dashboard. Go to the analyst zone here and go to the Ichimoku dashboard. Ichimoku dashboard में जब भी आप जाएंगे, so I'll repeat the steps again. Go and remove all the time frame charts. Suppose जो भी है उसको just click on cross, वो हट जाएगा, and keep only the 30-minute chart. Then select the CS bearish. तो यहां पर ट्रेंड इसका बेरिश है, वो आपने तय कर लिया। बट लेकिन क्या वो ओवरबॉट या ओवरसोल्ड में नहीं है, यानी अगर 20 से कम है उसका स्कोर, तो इट इज जस्ट गेटिंग स्टार्टेड, थोड़ा वार्म अप हो रहा है, तो अभी हम इसे बेचेंगे नहीं, थोड़ा और आगे जाने दीजिए। अगर 80 के ऊपर चले गया बेच बेच के, तो फिर यहां पर भी हम इसे नहीं बेचेंगे। सो ऐसे वाले स्टॉक्स मुझे बताइए। सो यू विल सी हियर द बेयर स्कोर। ऑलराइट, नाउ ये जो लिस्ट बना है यहाँ पे, उस पे एक रैंकिंग दिया गया है बेस्ड ऑन दीज लाइंस। ये लाइंस कैसे मूव होते हैं उसको देख के यहाँ पर एक रैंकिंग डेवलप किया जाता है। एज यू कैन सी हियर, देयर इज अ रैंकिंग, ओके, देयर इज अ रैंकिंग डिस्प्लेड हियर, एंड इन दिस रैंकिंग यू विल बी एबल टू टेक द ट्रेड। ऑलराइट, सो आई होप ऑल ऑफ यू आर गेटिंग एन आइडिया नाउ कि ये कैसे काम करता है। यू कैन सी हियर, दीज आर द रैंकिंग्स, and these rankings will help you to get an idea. Okay, these rankings will help you to get an idea of what stock I should consider. Okay, what stocks I should consider, आपको ये रैंकिंग से आएगा। तो स्कोर्स 20 से लेके 80 तक, ऑलराइट, स्कोर्स 20 से लेके 80 तक ये सारे रैंकिंग है। और देखिए, इफ यू गो हियर, if I sort it by rank, you see here there are stocks which are rank 4. Rank 4 यानी the lines are not very clear. So I should not be getting into the way. उसे मुझे छोड़ना है। Which are the best stocks? Can you tell me which are the best stocks? बताइए, which are the best stocks? Rank number 1. Okay, very good. Rank number 1 are the best stocks. Now इसमें थोड़े स्टॉक्स ऐसे होंगे जो काफी चल दिए, तो हमें वो स्टॉक्स नहीं चाहिए। सो यहां से मैं एक रेंज डालूंगा और मेरा पार्ट ए ऑफ द कंफर्मेशन पूरा करूंगा। सो माय पार्ट ए ऑफ द कंफर्मेशन इज हियर। सो आई एम सेलेक्टिंग 20 एंड 80 एंड आई हैव दिस। नाउ व्हाट इज माय नेक्स्ट स्टेप? आप लोग मुझे बताइए, व्हाट इज माय नेक्स्ट स्टेप? यस, यू हैव टू कंसीडर ओनली रैंक 1। नाउ आई विल हैव टू, so for example, I have got all these stocks here, so I can say, so for example 10, so I can see here that there are 10 stocks, so I can just select all of them and create the watch list first. Okay, I'll create the watch list. So watch list कैसे create करते हैं देख लेते हैं। चलिए, जो नए हैं न्यू ट्रेडर फैमिली मेंबर्स में जो नए हैं उनको भी मैं बता देता हूं, so please pay attention. All right, so I will click on watch list and I already have a watch list here. I will delete this now. Okay, all right, and now I will create a watch list. Right, I will create a watch list and I will say CS underscore 30 underscore bear. So यहाँ पर मैंने एक वॉच लिस्ट बना दिया और यहाँ पर प्लस क्लिक करने पे द वॉच लिस्ट इज क्रिएटेड। ओके, द स्टॉक्स आर नॉट एडेड, द वॉच लिस्ट इज क्रिएटेड। वॉच लिस्ट बन गया है। अगर आप यहां पर देखेंगे, यहां पर 10 स्टॉक्स आर वेटिंग टू बी एडेड। सो आई विल क्लिक ऑन द नेम। व्हेन आई क्लिक ऑन दिस नेम, the 10 stocks got added and this became 0 and this has got 10. So now if you see, now this particular watch list, it has got all the 10 stocks from the Ichimoku page having the strategy of CS bearish. उसमें ऑलरेडी स्ट्रैटेजी बिल्ट है और CS bearish के साथ जो 20 और 80 के बीच उसका बेयर स्कोर है, उसमें से हमने 10 स्टॉक्स यहां पर डाल दिए। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट दिस? कैन यू टाइप आई एम ऑन द चैट?
अगर आपको 10 स्टॉक चाहिए तो नीचे जाइए और स्टॉक सेलेक्ट कीजिए. ओके, नाउ यू हैव गॉट 10 स्टॉक्स. नाउ यू गो टू पेज नंबर 2. So I have got some more stocks in rank 1. So what I'm going to do, I'm going to select them, or I can just select all, and then I know the last 3 are not there, so I will just remove the last 3. Okay, so these are the stocks that are in rank 1. So I will click on watch list, और watch list में जाऊंगा, और ये जो 7 stocks है that I will add to my already created watch list. क्लियर? जो नए हैं उनको समझ गया? समझ में आ रहा है आपको? तो अभी टोटल पहले 10 ऐड किया, और अभी हमने 7 स्टॉक्स ऐड किया. सो टोटल 17 स्टॉक्स हैव गॉट एडेड. सो नाउ व्हाट हैज हैपेंड दैट आई हैव क्रिएटेड माय वॉच लिस्ट. ऑलराइट, सो नाउ आई वांट टू गो इनटू माय पार्ट बी ऑफ माय कंफर्मेशन. मेरा आइडेंटिफिकेशन हो गया. अभी मैंने कंफर्म किया कि कितने स्टॉक्स है satisfying the bear score, right? So based on this bear score, I found 17 stocks here, 10 stocks from here. So once this page loads, step number 1, 30-minute chart. Step number 2, CS bearish. Step number 3, ranking. ओके, तो आपका आइडेंटिफिकेशन हो गया. अभी कंफर्मेशन का पार्ट ए. ओके, नाउ what I will do is I will first check for bear score which is between 20 and 80. तो मुझे ये सारे स्टॉक्स आ गए, तो वो स्टॉक्स को मैं ऐड करूंगा इनटू द वॉच लिस्ट. ओके, वो स्टॉक्स में ऐड करूंगा इनटू द वॉच लिस्ट. नाउ आई विल गो and create the watch list. So now what I'll do, I will go into the very good. All of you are paying a lot of attention. That's nice. So in the rolling ticker, okay, in the rolling ticker, you don't have to sort the 17 stocks again. The 17 stocks are already sorted and ranked. क्योंकि if you see the last column, I just have to click on the column. और ये जो रैंक का जो टाइटल है और जो कॉलम है, it will only come when you invoke the proprietary strategy. इसके आप अगर आप इसको निकाल दोगे तो आपको वो रैंक वाला कॉलम नहीं दिखाई देगा. आपको ये क्लिक करना है तो ये आपको रैंक वाला कॉलम दिखाई देगा. क्लियर? और इसको एक बार क्लिक करेंगे तो वो सॉर्ट हो जाएगा. You can put any watch list name. So now I go into the rolling ticker, and then here what I have to do. Okay, here what I have to do, my step number 1, all right, my step number 1 is select the Camarilla. My step number 2 is select the watch list. ठीक है? So now step number 1, step number 2, watch list. So now once I selected the watch list, all right, what will happen? I will get a confirmation here. Like for example, selected the watch list, IndusInd Bank, score 2. Okay, so now IndusInd Bank score 2 आ गया, right? IndusInd Bank score 2 आ गया. So this will be my step number 3. Okay, this is my step number 3. So bearish score है तो क्या करेंगे? bearish score है तो क्या करेंगे? What will we do? bearish score है तो absolutely right, we will sell. Correct, we will sell. So now if you are going to sell, then we will sell below the day low. How many of you got it? We will sell below the day low. डे लो के नीचे हमें बेचना है. ऑलराइट, ऑलवेज सेल बिलो द डे लो ऑफ द स्कोर 2. इधर स्कोर 2 आ गया, आपको पता है यहां पर है, राइट? उसके नीचे आप ट्रिगर रख सकते. नॉट ऑन स्कोर 2.
ओके, नॉट ऑन स्कोर 2। सो यहां पर देखिए, ये जो स्कोर 2 का वैल्यू 1016 है, आई विल कम टू द ट्रेड, you will put a trigger below this. Now, okay, you have got this. Now the execution time. Okay, identification हो गया, confirmation हो गया. How many of you are clear with this? Please type I.C on the chat. Identification हो गया, confirmation हो गया. Please type I.C on the chat, guys. I.C. I want everyone to type. Very good. Rank column is very much there. Rank column is very much there. Please go and check the Ichimoku. Ichimoku rank column will come only if you click on CS Bearish. Only when you click on CS Bearish, you will get the rank column. Otherwise, you will not get the rank column. You will get the rank column only if you click on CS Bearish. CS stands for Chicago span. Score is a proprietary approach. All right, score is a proprietary approach. Bearish score means the trend in that stock is bearish. 20 to 80 means it is a range where you can participate. Below 20, do not participate. Above 80, do not participate. If it is not getting reflected, please refresh your screen, clear your cache, and then try again. Right? So if is there in indices, you can see here indices, what is the score? Some of you are asking on indices. The rank is there also on indices. Clear? If you want on the banking stocks, you can see on the banking stocks also. Clear, everyone? I have clicked on bearish, so the ranking is for the bearish stocks. Default basket is Nifty FNO. Now, once the stock comes here, all right, once the stock comes here, then I can just get the levels, all right, I can just get the levels from the stock analyzer. So you have the stock analyzer, right? You have the stock analyzer here. So these are the levels that are there. So now if you want to sell, all right, sell below L4. Okay, sell below L4, buy above H4. So these are the levels for action. Okay, these are the levels for action. These are the levels for action, and you got to have a target zone of H6 on the upside and L6 on the downside. So now, when will you take the trade? Right? When will you take the trade? You will take the trade from the rolling ticker. You will keep a trigger below the low. So this is of 14th. All right, this is of 14th. So the watch list which we have created now, is for the next trading day, which is tomorrow. All right. So tomorrow I want you to observe. If you are new into the market, if you have been trading with Ichimoku, you can go ahead and take the trade. But if you are not trading with Ichimoku, wait for a while. I will take you step by step. If you are new to Ichimoku, do not worry. I will take you step by step. After Tuesday भी trade करेंगे तो कोई problem नहीं है. Clear, everyone? The stock has already moved below H4. We are waiting for the final confirmation. That is the days low. So यहाँ पर जो days low है, उसके नीचे आपको फाइनल कंफर्मेशन मिलेगा. यहाँ आपको इनिशिएशन मिलेगा. यहाँ पर जब स्कोर 2 आता है, उसका मतलब है कि इसमें मूवमेंट शुरू हो गया है. जब स्कोर 3 आने लगता है, तो दैट मींस दैट द मूवमेंट हैज स्टार्टेड. सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट
So as the trade moves, the scores are calculated. So that is why I said score 2 will alert you. स्कोर 3 के बाद आप इनिशिएट कर सकते हैं. तो स्कोर 3 आने के बाद इनिशिएट करने से अच्छा है कि स्कोर 2 के लो के नीचे आप ट्रिगर डाल दीजिए. फॉर एग्जांपल इंडसइंड बैंक 1015.55, 1014.50, ₹1 छोड़ के आप ट्रिगर डालकर रख सकते हैं. क्लियर एवरीवन? Is everyone clear with the ICE setup with Ichimoku? So this is the breakdown or breakout strategy. The same thing you can do on the upside. Okay, the same thing you can do on the upside. I will just wait for 2 minutes. I want you to do on the upside and tell me. I want you to do upside on. Tell me. I want you to do it right now. I want you to do it right now. Yeah, Achyut, please go ahead and do it. First, do what I have said. I have repeated it at least 7 to 8 times. I want you to go ahead and do it. I want everyone to try. I have repeated the steps at least 7 to 8 times. आप लोग try कीजिए और and come back with the question. Yes, yes, Joseph. CS Bullish. Now I am removing CS Bearish. I will also do it along with you, but I want you to start. Keep it at 30-minute chart. After the whole story is over, you are asking Ram कौन है? Rank 1, rank 1. Rank 1 में स्टॉक है. रैंक 1 में स्टॉक है. रैंक 1 में सिर्फ एक ही स्टॉक है. रैंक 1 में सिर्फ एक ही स्टॉक है. राइट? सो देयर इज नो नीड टू क्रिएट वॉच लिस्ट ऑल्सो एज ऑफ नाउ. ऑलराइट, देयर इज नो नीड टू क्रिएट वॉच लिस्ट ऑल्सो एज ऑफ नाउ. सो हियर व्हाट यू हैव टू डू, again if you put a bull score, right, the confirmation part, you will select 20, you will select 80 if you want to buy. ओके, अभी निफ्टी एफएनओ डाला है. अभी आप यूनिवर्स बढ़ा भी सकते हैं. सो यू कैन मेक इट निफ्टी 500 ऑल्सो. निफ्टी 500 में भी कुछ रहा तो आएगा, बट निफ्टी 500 में भी कुछ फिलहाल नहीं है. राइट? सो इन दिस स्कोर, सो निफ्टी एफएनओ में, राइट, सो निफ्टी एफएनओ में ऑन द सीएस बुलिश, the bull score between 20 to 80, you are having all of this, but with rank 1 we are having only one stock. We are having only one stock. So after rank 1, ideally you have to create a watch list. Ideally you have to create a watch list. If there are even 3 4 also, create a watch list. Why are you creating a watch list? So that yahan se aapko confirmation milega when it moves. Okay, you will get a confirmation when it moves. Now otherwise you have to keep checking. Indian Hotel एक stock है, you can keep checking here. Otherwise it is better that you put on a watch list and then you pull it up from here. Is everyone with me? सबको समझ में आया ये? सपोज यहाँ पर बुलिश स्टॉक है. ओके, सपोज यहाँ पर बुलिश स्टॉक है एंड सपोज यहाँ पर आपका इंडियन होटल आया है. सो इंडियन होटल स्कोर नंबर 2. ओके, तो स्कोर 2 आया. सो देन बाय अबव द हाई. सो यहां पर स्कोर 2 आ गया. तो स्कोर 2 का हाई क्या है? 733.95. राइट? सो अबव दिस, राइट, अबव दिस वी विल इनिशिएट अ ट्रेड. क्लियर? तो इसके ऊपर आप ट्रिगर रख देंगे. 733.95 है, 734.50, यू कैन पुट अ ट्रिगर. So what will happen is once it moves above this, you will be able to initiate a trade. Is everyone with me? समझ में आया आपको? So now when you initiate the trade here, all right, when you initiate the trade here above H4, all right, your stop loss will be below H3. Clear?
735 is calculated by NeoTrader based on the price action. So what you are seeing right now in rolling ticker is all old data. Okay, what you are seeing in NeoTrader right now is data as of Friday, as of Thursday. Clear? Let's go and check out some examples. आपको और भी clarity मिलेगी. Okay, you will get more clarity as you go and take a look at some more examples. Okay, we'll go and take a look at some examples, and you will be able to get more clarity on that. Okay, so let's take it up from here. Okay, so let's check out the examples which are based on ICE. So we are going to check out the ICE examples. We are going to find out exactly how the trades came out, what was the kind of movement which was there. All right, so these are some recent examples. All right, so you can see here, what have we done? We have selected again Indian Hotel. At that time it was 732. The score was 2. So above the high, the triggers was placed. And why? Identification is, come on everyone, repeat after me. Identification, first step identification. First step identification, 30 minutes. Very good. Then second step in identification, CS Bullish. Third step, sort by the rank. करेक्ट? तो ये आपका आइडेंटिफिकेशन हो गया. उसके बाद कंफर्मेशन पार्ट ए, वी विल डू द स्कोर. सो वी विल चेक कि व्हाट इज द entire set of stocks. All right, now this entire activity, all right, first 30 minutes hai, so wait till 9:45. okay, wait till 9:45. 9:45 के बाद आपको वॉच लिस्ट बनाना है. okay, 9:45 के बाद वॉच लिस्ट बनाना है. some of the trades stocks will get updated, so you can create a watch list once, and maybe somewhere around 12:31 you can create a watch list again. So that's what I do. So I create a watch list once around 9:45, 10. Then again I create a watch list closer towards 12:31 and update that watch list. All right. So now based on this, okay, based on this I get the stocks, and based on that I create the watch list. All right. I create the watch list, and that watch list, now once I create that watch list I will pull it up in rolling ticker. Now in rolling ticker, when I get score 2 I will be able to track it for the levels. So आप देखेंगे कि सारा चीज यहां पर से हो रहा है. आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है. यहां पर से पूरा ट्रैकिंग हो रहा है, और यहां से द trades are getting executed. So you can see here, this is your breakout level, and these are the targets. Same way, let me show you some more examples. You can see here the potential of the trade. All right, the potential of the trade to move is very much higher. The potential of the trade to move is very much higher. You can see here, this is the potential of the trade. So once it crosses H4, all right, once it crosses H4, yahan se movement is emerging. All right, so you can see this. We are going to see this in the live market. So this is the execution, but again we are identifying. Okay, first the 30-minute chart. All right, first the 30-minute, then we are telling you the bearish setup, then we are telling you where is the score, right? So you're sorted it by the rank, so your identification is done. Then you are confirming what is lying in between the score, creating the watch list. That is part A. What is part B? Part B is pulling it in rolling ticker. So once you pull it in rolling ticker, then you can execute the trade. Got it? So you can see here again in
the stock analyzer, you will have the levels. So levels are available, the triggers are available, the signals are available, the filtrations are available, everything is done, everything is taken care of. आपको सिर्फ उसे स्टेप बाय स्टेप आइडेंटिफिकेशन, कंफर्मेशन, एग्जीक्यूशन को फॉलो करना है. क्लियर एवरीवन? कैन यू टाइप ICE ऑन द चैट गाइस? सबको समझ में आ रहा है? ICE क्लियर है? आइडेंटिफाई कैसे करना है? इचिमोकू से करना है. कंफर्मेशन का पार्ट ए में स्कोर यूज करेंगे, लिस्ट को छोटा कर देंगे, उसका वॉच लिस्ट बनाएंगे, वॉच लिस्ट को रोलिंग टिकर में पुल करेंगे. ऑलराइट, सो वंस इट कम्स इनटू द रोलिंग टिकर, the moment that stock, okay, the moment that stock which you have identified comes into score 2, I am going to repeat the same thing on the NeoTrader as well. Just hold on. All right. So I'm just showing you the potential of this particular trade. Okay, potential है, अच्छी खासी मूवमेंट आपको मिलेगी. Why? Because you have already identified the stocks. So already आपका फिल्ट्रेशन हो चुका है और फिल्टर्ड स्टॉक्स का प्रोबेबिलिटी जो है वो काफी स्ट्रांग है. राइट, ऑन द ऑप्शंस फ्रेंड वी विल बी डिस्कसिंग इन द लाइव मार्केट. राइट नाउ लेट अस कॉन्सेंट्रेट ऑन द ICE आइडेंटिफिकेशन, कंफर्मेशन, एग्जीक्यूशन के बारे में जो भी सवाल है यू कैन डू इट. ऑलराइट, so like I said, we are going to be focusing on how to do it in a step by step way. So आपने देखा यहाँ पे 30 मिनट का चार्ट है, CS बेरिश है, रैंक 1 है, तो मैं काम करूंगा. नाउ काम करना है, व्हाट इज द स्कोर? इज इट बिटवीन 20 and 80? You can see here, for example, this is between 80 and 100. All right, this is between 80 and 100. रैंक 1 है, between 80 and 100 है. तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे, right, so you will see that the chances of the trade to work is limited. Better is to go for 20 to 80. आपको सब टाइप के स्कोर्स मिलेंगे, बट गो फॉर 20 to 80. दैट इज द होल आइडिया. हाउ टू डू इट इन ऑप्शंस इज समथिंग व्हिच विल बी कवरिंग इन द लाइव सेशन. सो जस्ट होल्ड ऑन. तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट अंडरस्टैंड द सीक्वेंस. जो सीक्वेंस है उसको नोट डाउन कीजिए एंड ट्राई एंड अंडरस्टैंड द सीक्वेंस. सो नाउ यू कैन सी हियर इन दिस पर्टिकुलर ट्रेड, identification, confirmation, execution. So everyone knows that Gale moved a lot on the downside. You can see here that this was a breakout level and this was a target, right? It moved quite well beyond this. You can see here that आपको breakout levels मिलेंगे, सारे levels मिलेंगे पेज में. So NeoTrader has got everything covered for you. The NeoTrader has got everything covered for you. You do not have to worry. Again, you can see here मार्केट का ट्रेंड थोड़ा बेरिश ज्यादा था, सो दैट इज व्हाई यू विल सी बेरिश स्टॉक्स मोर. टुमारो इफ देयर इज अ पॉजिटिव मोमेंटम, सो द फर्स्ट एनी टाइम इन द मार्केट, ओके, एनी टाइम इन द मार्केट, द फर्स्ट रिवर्सल ऑन द पॉजिटिव साइड विल कम ऑन द लोअर टाइम फ्रेम. लोअर टाइम फ्रेम से ही हायर टाइम फ्रेम पे पड़ेगा. सो यू कैन सी हियर नाउ, दिस इज हाउ यू कैन सॉर्ट आउट ऑल योर stock selection problem. How many of you had stock selection problem? How many of you had stock selection problem? Do you think that ये stock selection problem से आपका problem solve हो जाएगा? How many of you think कि ये फिल्टर करके आप रैंडमली कोई भी स्टॉक सेलेक्ट नहीं कर रहे, आप रैंडमली कोई भी स्टॉक सेलेक्ट नहीं कर रहे, यहां पर पूरा प्रोसेस है. क्योंकि अगर CS बेरिश है मतलब उसमें एक ट्रेंड है. हमारे प्रोप्राइटरी अप्रोच से जब भी CS बेरिश है तो वहां पर एक ट्रेंड है, तो वो ट्रेंड वाले स्टॉक आपको दे दिए. फिर उसके बाद उस ट्रेंड में ओवरबॉट ओवरसोल्ड वाले भी हमने हटा दिए. और इसमें जब भी मूवमेंट आएगा तो आप जाकर आपका ट्रेड ले सकते हैं. दैट इज द होल आइडिया हियर, हाउ यू कैन एग्जीक्यूट विदाउट हेजिटेशन. बहुत बार डर लगता है कि ये स्टॉक चलेगा क्या, ये स्टॉक नहीं चलेगा क्या. ये सारे जो इश्यूज है वो सारे आपके सॉल्व हो जाएंगे. सो होल ऑब्जेक्टिव इज हाउ कैन आई गेट रिड ऑफ दैट प्रॉब्लम. How can I get rid of that problem? How can I ensure that I am able to move step by step and find out
व्हाट आर द लेवल्स? लेवल्स भी ढूंढना नहीं है आपको, सारा लेवल्स अवेलेबल है. ऑल द लेवल्स आर अवेलेबल इन न्यू ट्रेडर. ऑल यू गॉट टू डू इज फॉलो द प्रोसेस, फॉलो द प्रोसेस, फॉलो द प्रोसेस. There are many things which I can choose in Ichimoku, but I have shown you a very simple way to get started. You can do with TS and KS also. You can do with cloud also. So, like for example, somebody had asked about what is the difference between thick cloud and the thin cloud. So, thick cloud is where the strong momentum is there. Okay, where the future cloud is thick, the momentum is there, and then the probability of the trend to continue is much higher. If the cloud becomes weak, the chances of the cloud to break is higher. I hope all of you are clear. The stop loss will be at H3 if you are buying, and it will be at L3 if you are selling. So suppose you are selling here L4. So in this case, your stop loss will be at L3. If you are buying, your stop loss will be at H3. I hope you are clear now. Probability of winning trades is much higher. There is no particular number because all the numbers depend on how much of extent you trade. So now it depends on how much of trade you're going to do. Though no strategy will tell you that it is 100% guarantee. ठीक है, 100% गारंटी वाला कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं है और मैं भी नहीं कहूंगा. बट लेकिन ये जो आप स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं उससे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बढ़ जाता है. सो 7 trades out of 10 कैन गिव यू मनी. नाउ टू गिव यू मनी, द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मार्केट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, राइट? How was the market on Thursday? Market on Thursday was very range bound, but still, based on this selection, there were some profitable trades. Tata Consumer, for example, was one trade which moved quite well on that day. Adani Ports was there. So what I'm trying to convey here is that I am guaranteeing you a process that will give you more winners than losers, right? That's what you want, and that's what you will get. Because I am here to give you the confidence that movement in the market is not in my hands, but the process to follow in the market. Okay, the process to follow in the market is very much possible. Okay, the process to follow in the market is very much possible, and that's what I'm going to tell you step by step, day by day. Because मुझे पता है कि आप सबको एक you all want to make money, but the problem is that you are not having the right sequence of steps. So that's what I'm going to do. I'm going to clear out all those issues. I'm going to clear out all your systematic issues, system issues, टेक्नोलॉजी इश्यूज, वो सारा चीज मैं आपका सॉल्व करूंगा. बट मार्केट का मूवमेंट का जो गारंटी है वो मेरे हाथ में नहीं. बट नियो ट्रेडर के द्वारा आपको अगर मार्केट में मूवमेंट है, कम मूवमेंट है तो कम आपको दिखाई देगा. सो दैट इज व्हाई ऑल दीज रूल्स एंड स्टेप्स हैव बीन इंप्लीमेंटेड फॉर यू, सो दैट यू विल ओनली गेट इफ देर इज अ मूवमेंट. इफ देर इज नो मूवमेंट यू विल नॉट गेट. अगर स्कोर 2 आ गया, स्कोर 2 के लो के नीचे अगर गया नहीं तो वहां पर आपका सेल ट्रिगर नहीं हुआ, राइट? इंस्टेड ऑफ यू जस्ट जंपिंग इन, मेनी ऑफ यू सेड दैट आपका पैसा जाता है बाय जंपिंग, बट आपको डरना नहीं है. दिस डेटा ऑफ न्यू ट्रेडर इज रिफ्रेश्ड एवरी 30 minutes. Every 30 minutes it checks whether there is any Ichimoku signal which is there. So real time refresh होता है, फिर उसके बेसिस पे you can go ahead and you can do the ICE. ICE बहुत इंपॉर्टेंट फिलोसफी है और मैं चाहता हूं कि आप लोग सब लोग इसे इंप्लीमेंट करें. जैसे कि मैंने कहा, L4 के नीचे बेचेंगे तो आपका स्टॉप लॉस L3 के ऊपर होगा, H4 के ऊपर लेंगे तो H5 के H3 के नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा. गॉट इट? So that's how you got to move, and that's how you got to do it in a consistent way. So if you are going to do it in a consistent way, and if you want to do it in a smarter way, then you have to follow ICE. There is absolutely no choice. अगर आपको लगता है कि ICE फॉलो किए बिना आप काम कर सकते हैं, I assure you that आप काम कर लेंगे, कभी पैसा बन जाएगा, but then it will not be to your satisfaction. All right. So now let me tell you once again the steps. जिसको भी समझा नहीं है, ये आपका समय है समझने के लिए. All right. So now Ichimoku यहां पर है
CS bullish, CS bearish, these are the proprietary approaches. Step number 1, मेरे साथ बताइए. I want everyone to tell along with me. Step number 1, keep only 30-minute chart. Step number 2, keep CS bullish for bullish stocks, CS bearish for bearish stocks. Okay. Then sort it as per the rank. So rank 1 को ही हमें लेना है. तो आपका ये आइडेंटिफिकेशन हो गया कि ये सारे स्टॉक्स अवेलेबल है. तो अभी इसे मुझे फिल्टर करना है. तो क्या करेंगे? बेरिश सेलेक्ट किया है तो बेयर स्कोर सेलेक्ट करेंगे. बेयर स्कोर सेलेक्ट करने के बाद 20 से लेके 80, यहां पर ये सारे स्टॉक्स का वॉच लिस्ट बनाएंगे. ओके, आई कैन सेलेक्ट ऑल ऑफ देम लाइक दिस, or I can just select all of them like this. Only rank 1 I will add. I will add to the watch list. Okay, I'll add to the watch list. अगर watch list बना नहीं है, okay, मान लीजिए ये watch list मेरा नहीं है, मैंने बनाया नहीं है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा watch list का नाम CS_30_bear. So यहाँ पर I'll add the stocks. I'll add it to the वॉच लिस्ट. ओके, मैंने ये स्टॉक्स को ऐड किया वॉच लिस्ट में, और ये वॉच लिस्ट को रोलिंग टिकर में जाएंगे. एंड रोलिंग टिकर में क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल सेलेक्ट द वॉच लिस्ट. सो विच इज द वॉच लिस्ट? आई हैव सेलेक्टेड द CS 30-minute bear. नाउ इस पे आई विल टेल NeoTrader रोलिंग टिकर पेज टू रन द कैमरिया रूल्स. उसके बेसिस पे यहां पर जब भी स्कोर 2 आएगा, बजाज फिनसर्व स्कोर 2, व्हाट आई विल डू? यस फ्रेंड्स, अभी आप लोग बताओ. बजाज फिनसर्व स्कोर 2, जस्ट मान लीजिए कि द ट्रेड इज ऑन, द मार्केट इज ऑन, यू हैव गॉट बजाज फिनसर्व स्कोर 2. सो व्हाट आई विल डू? व्हाट विल आई डू? व्हाट शुड आई डू? Yes, I will place a trigger below day low. All right, 1640, 1 रुपया 2 रुपया छोड़ के आई विल प्लेस अ ट्रिगर 1638 पे एक ट्रिगर रखूंगा. नाउ 1638 के नीचे गया तो मेरा मूवमेंट शुरू हो गया. नाउ आई कैन जस्ट क्लिक ऑन दिस नेम एंड द स्टॉक एनालाइजर विल ओपन. नाउ आई विल गो इनटू द लेवल्स पेज एंड फाइंड आउट कि इसके नीचे तो आ गया. अभी नाउ आई विल सी कि व्हाट इज माय टारगेट. माय टारगेट इज L5 and L6 and my stop loss is L3. क्लियर?